Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the second lecture of this series of Constitution of India. So in the previous lecture we had left the topic constitutionalism. Constitution constitutionalism means अगर हम बोलें कोई भी ऐसी चीज जो कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा भारत का संविधान है उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर वो चल रही है तो बोलेंगे हम दैट इट इज हैविंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को मान लो एक तरीके से आत्मा मान लो शरीर की। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स। Constitutionalism is that basic principle which requires that there should be a control upon the exercise of powers by the government so that it does not destroy the basic structure of the constitution. That is the basic spirit of the constitution. Constitutionalism वो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं which require that there should be a control upon, जो ये चाहते हैं कि कंट्रोल रहे, शुड बी कंट्रोल अपॉन द एक्सरसाइज ऑफ पावर। किस पर कंट्रोल रहे? जो गवर्नमेंट को या फंक्शनरी को, किसी को भी हम पावर दे रखी है, हमारी पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ और बाय द लॉ, तो जो भी पावर दे रखी है उन पर कंट्रोल रहे, वो आर्बिट्रेरीली अपनी पावर को यूज ना करें। किसी भी डिपार्टमेंट को अगर पावर दे देंगे और वो अपनी मनमानी तरीके से यूज करने लगेगा, then it is the violation of societal rules, और वो rules और जो आत्मा है that is in the constitution only, so that it does not destroy the basic structure of the constitution. That is the basic spirit of the constitution. और अगर पावर्स को आर्बिट्रेरी यूज करेंगे तो ये क्षति होगी आत्मा के, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है उसको क्षति होगी। In the previous lecture we had seen what is the meaning of constitutionality. Constitutionality means what? Anything which is not in the violation of the constitution, it is said to be constitutional. That is what is called constitutionality. Now we are talking about constitutionalism. So कोई भी बात, सिंपल लैंग्वेज में देखें, कोई भी बात जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता, that would be constitutional, and the characteristic of that thing is called constitutionalism. When we are talking about the constitutionalism, इसके दो डायमेंशंस हैं। So एक डायमेंशन हमने देखा, it is one dimension is checks and balances. Checks and balances कह लो या फिर control upon the government's power. Means while exercising the power, government must keep in mind that it would not violate the constitution का essence. Means government in exercising its power should not violate the essence of the constitution. Other dimension of the constitutionalism is different. It's a philosophy that a society can be governed or regulated on the basis of some set principles. So ये जो दोनों डायमेंशंस हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के डायमेंशंस हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे कभी भी आपको शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। आईएएस एग्जाम में तो पूछ चुके हैं पहले, और जुडिशियरी में भी पूछ सकते हैं, मेनली इन यूपी, बिहार और उत्तराखंड। तो सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करो, जब भी किसी शब्द के आगे इज्म लग जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, तो इज्म का मतलब हिंदी में क्या होगा? वाद। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संविधान वाद, सोशलिज्म मीन्स समाजवाद। तो जब भी वाद लग गया किसी शब्द के पीछे, इज्म लग गया, दैट इज ए फिलॉसफी। सो सेक्युलरिज्म इज ए फिलॉसफी, एन आइडियोलॉजी, एन आइडिया। Socialism is a philosophy, an idea, an ideology. Similarly, constitutionalism is an philosophy or an idea. So ये जो वाला point है, government control etc. So this was held by the Supreme Court in several judgments, Iyer Kohli judgment, Nagaraj judgment. तो इसकी बात तो Supreme Court ने explicitly कही है, but इसकी बात, इस वाले part की बात explicitly Supreme Court ने नहीं कही है in these judgments, and this is rather more important to know when we are talking about the society, and it is Indian society.
सो इंडियन सोसाइटी हमारी इज ऑफ मिक्स्ड कल्चर। बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जातियों से, अलग अलग रिलीजन से, रंग, कास्ट, कल्चर, क्रीड, तो ये काफी अलग अलग विभिन्न तरीके के लोग हमारी सोसाइटी में, पूरे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। और ये सारे लोग एक साथ मिलकर, मिलजुल कर रहते हैं और सम्मिलित होकर रहते हैं। अब केरल से आया हुआ कोई व्यक्ति, और उत्तर प्रदेश से, नॉर्थ इंडिया से आया हुआ कोई व्यक्ति, या कर्नाटक से, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, देयर आर वेरियस पर्सन विच कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। और एक पर्टिकुलर स्टेट में जाके, मान लीजिए कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, जैसे कोटा में चले गए, तो इधर काफी लोग केरल के भी मिलेंगे, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो सारे स्टेट से, सारे कल्चर, सारे क्रीड, और वो रहते हैं और शांति के तरीके से। हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे, पारसी भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, तो ये सारे लोग शांति प्रिय तरीके से रहते हैं। अब क्या इनको, क्योंकि अभी ये 12th क्लास में पास आउट किया है और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई बोर्डिंग स्कूल्स में अलग अलग स्टेट से आकर, कोई अच्छा बोर्डिंग स्कूल है उसमें अलग अलग स्टेट से आकर उधर रुके हुए हैं बच्चे, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, वो पीसफुली रहते हैं, उनकी एक सोसाइटी है, सो पीसफुली रहते हैं, एक दूसरे के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं होता, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है, एक दूसरे के रंग भेद भी नहीं है, जाति भेद नहीं है, मतभेद नहीं है, मन भेद नहीं है, मतभेद तो हो सकता है। सो बड़े पोलाइट तरीके से, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, अनटिल एंड अनलेस किसी के अंदर कोई ऐसी दुर्वासना ना के बस जाए कि वो क्राइम करने पर आतुर हो जाए। तो ऑलवेज एक्सेप्शंस आर देयर। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी, अगर हमारे पास, अब तो यहाँ पे आईपीसीबी है, सीआरपीसीबी है, सीपीसीबी है, दे आर वेरियस डिफरेंट लॉज, पर अगर इससे पहले अगर हमारे पास कोई भी लॉ नहीं था रिटन फॉर्म में, तो क्या हमारी सोसाइटी गवर्न नहीं हो रही थी? तो क्या इसमें न्याय नहीं होता था? सो व्हेन देयर इज नो codified law, written form of law in the society of India, then also our society is peacefully governing and running. So there are always larger purpose of the society. हर सोसाइटी का एक लार्जर पर्पस होता है, तो हमारी भी सोसाइटी का, जो हिंदुस्तान है या इंडिया है, इसका एक लार्जर पर्पस था, है और रहेगा, सत्य, अहिंसा और किसी प्रकार का भी मनभेद ना होना, एक दूसरे के साथ भेदभाव ना करना। तो दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सिमिलरली एवरीवेयर, अब हमने पूरे हिंदुस्तान की बात करी, उसी प्रकार से कोई संगठन बनता है, कोई एनजीओ बनता है, कोई सोसाइटी बनती है, कोई पार्टी बनती है। एवरी सोसाइटी विल बी हैविंग सम certain set principles which are implicit in the society, and those set principles are the governing principles of that society. अब मान लें कोई अखाड़ा है, कुश्ती का अखाड़ा है, या फिर एक क्रिकेट टीम एकेडमी है, फुटबॉल एकेडमी है, तो एक उनके बेसिक सेट प्रिंसिपल्स होते हैं कि जो अच्छा खिलाड़ी होगा उसी को वो सोसाइटी, या मान लो कोई फुटबॉल के लिए रिलेटेड है, या टीम है, या क्रिकेट से रिलेटेड सोसाइटी है, या कबड्डी, खो खो, व्हाटएवर, तो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी जो अच्छा प्लेयर होगा उस खेल में, उसको ही आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, उन्हीं प्लेयर्स को आगे अपनी टीम में रखा जाएगा और वो ही आगे खेलने जाएंगे किसी अदर टीम से। सो उसी प्रकार से स्टेट टीम्स होती हैं क्रिकेट की। अब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट टीम्स में जो अच्छे खिलाड़ी होंगे, काफी डिस्ट्रिक्ट से मिलाकर उनको छांटा जाएगा और फिर वो स्टेट टीम में आ जाएंगे। जब डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया वो आपस में खेलेंगे, उसमें से जो अच्छे होंगे, बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, उसको फिर नेशनल लेवल पे लाया जाएगा। देन दे विल प्ले फॉर द नेशन। सो हियर व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स और आइडिया दैट they have to achieve for their district, state, nation. So achievement is the basic idea, basic philosophy. अब उधर ऐसा तो नहीं है कि कोई रिश्वत देकर या पैसे देकर बीच में, भाई ये पैसे वाला है, ये गरीब है,
तो उसका भेदभाव कर कर और पैसे वाले को ले लिया जाए और गरीब को छोड़ दिया जाए, तो ये एक संस्था की फिलॉसफी नहीं होती। I always tell you that exceptions are always there. So the idea is the society can always be controlled and regulated on the basis of those principles which are implicit in the society. So एक खेल का हमने उदाहरण लिया था, जैसे क्रिकेट एकेडमी है, तब उसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। सोसाइटी ऑलवेज कंट्रोल एंड रेगुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दोज प्रिंसिपल्स, कि सुबह उठना है, खिलाड़ियों को इतने बजे ग्राउंड में पहुंचना है, इतने मीटर दौड़ना है, दौड़ने के बाद ये एक्सरसाइज करनी है फॉर मेकिंग देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, इस तरीके की प्रैक्टिस करनी है। एक बैटिंग के लिए जो आए, जिसको फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसको इस तरीके की बैटिंग के लिए प्रैक्टिस करनी है, बॉलर को इस तरीके से लिए बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी है। सो वो कहीं लिखित नहीं रहती उस एकेडमी में। और वो सोसाइटी जो अब मानकर चल रहे हैं क्रिकेट की सोसाइटी है, वो सोसाइटी ऑलवेज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड ऑन द बेसिस। अब जो प्रैक्टिस पर नहीं आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, मान लो उस एकेडमी को ज्वाइन कर रखा है और प्रैक्टिस नहीं करता है, परफॉर्मेंस नहीं देता है, दौड़ने के लिए नहीं आता है और कुछ अचीवमेंट भी नहीं करता है, तो वो एकेडमी उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगी। व्हाई? बिकॉज द सोसाइटी इज रनिंग ऑन सम बेसिक प्रिंसिपल्स विच आर इम्प्लिसिट इन द सोसाइटी। वो पहले से ही उसके अंदर है, उसको कहीं कोडिफाई करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखें तो भी ठीक, उन प्रिंसिपल को आप इम्प्लिसिट लिखो तब भी ठीक है, और ना लिखो तब भी प्रिंसिपल्स उस समाज में होंगे और उन प्रिंसिपल्स के आधार पर समाज का नियंत्रण किया जा सकता है। So the thought that the society can be positively constructed, positively controlled and regulated, एक सोच कि समाज को सकारात्मक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, समाज को सुगठित किया जा सकता है, तो ये जो सोच है, ये थॉट, दिस इज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। उसी आइडिया को हम कहेंगे that this is the idea of constitutionalism. Constitute means what? To constitute means to create. So constitute means to create, and when we are talking about constitution, it means creating a organized society. So when we are talking of India, this society, Indian society, remained organized since the beginning. और अगर आपसे ये कहा जाए कोई कि क्या हमारी सोसाइटी प्राचीन समय में ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, आजादी से पहले ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, आजादी के बाद ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे के पहले ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो ये सारी व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी हमेशा पहले भी ऑर्गेनाइज्ड थी, बाद में भी ऑर्गेनाइज्ड रही है, और अब भी ऑर्गेनाइज्ड है, इन फ्यूचर भी ऑर्गेनाइज्ड रहेगी, बिकॉज वी आर हैविंग दैट फीलिंग इन अवरसेल्फ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमको पूर्वजों से मिलती आई है और हम आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे। अब इसमें कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तो वो एक सीमित दायरे में होते हैं और सीमित एरिया में होते हैं, और ये पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं। ये हमारी सोसाइटी जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है, शांति प्रिय, पीसफुली कोऑर्डिनेट वर्क कर रही है, उसको भंग करने के लिए कुछ आपराधिक तत्व इस पीसफुल सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के थ्रू और हमारी शांति भंग करते हैं, और हमको यह प्रतीत कराते हैं कि हमारी सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। दैट वुड लूज द कॉन्फिडेंस ऑफ द सोसाइटी। बट हमारी सोसाइटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्फिडेंस है, जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर है, ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, वो काफी पुराना है और वो इस आपराधिक तत्व और मानसिकता के ऊपर भारी पड़ता है। तो कुछ समय के बाद, पर्टिकुलर समय के बाद, 15 मिनट 20 मिनट के बाद जो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो जाता है, एक आंधी की तरह आता है, उसके बाद वो पूरी सोसाइटी उसी प्रकार से शांति प्रिय तरीके से वहीं पर, जहां पर दंगे होते हैं या फिर कुछ होता है, वहीं पर रहने लगती है एक सुव्यवस्थित तरीके से अपने आप। इधर किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की, किसी फोर्सफुल अथॉरिटी की हमको जरूरत नहीं पड़ती कि हमारी सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड वे में रहे, बिकॉज
it is in our society. It exists in our society. So when we talk about constitution, then it means constituting a organized society. So this society remained organized since the beginning. जब इस सोसाइटी की उत्पत्ति हुई थी. Today also it is a organized society. You will find that even if there is not written rules and regulations, then also our society will run smoothly. So every society is having a larger purpose. जैसे क्रिकेट एकेडमी की सोसाइटी है तो उसका larger purpose है to achieve the victory. So every society is which is organized, not an abstract kind of society, which is not a purposeless society. They are having a purpose. And if you are talking about the society at large, then they are also having a large purpose. When we talk about the Indian society, it is having a purpose at large. And what is the purpose? To live peacefully with one another. ये purpose तो हमेशा होगा with other purposes. Like that, to attain the larger level of stability in the society. To attain the larger level of stability in the society. So उस context में there will be some basic governing principles जिनकी उत्पत्ति सोसाइटी में से ही हुई होगी. So in each and every society there are some basic principles which do exist in that society, and every society will having a set of basic principles, and it is possible to govern that society, to control that society or to organize that society on the basis of those principles. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, then in constitution you will say that you are having the concept of secularism. अब ये secularism का जो concept है ये हम बाहर से लाकर इंडिया में impose कर रहे हैं या फिर already इंडियन सोसाइटी में था. ये concept इंडियन सोसाइटी में पहले से था या फिर बाहर से लाकर लोगों को बाइंड किया. अगर हमने बाइंड किया होता बाहर से लाकर तो लोग इस concept को secularism को follow नहीं करते. Indian society was always secular. It is always multi-religious. Even if Islam had not come to India, even if Christianity had not come to India, Hinduism was there, and in Hinduism, Jainism was there, Buddhism was there. So Indian society is not uni-religious ever. Since beginning, we are having more religions. Later on, Islam came, Parsis came, Christianity came, और उन इस्लाम के क्रिश्चियनिटी पारसी तो ये सारे धर्म का जब इन्वेड हुआ इंडिया में आए तब भी क्या हमारी इंडियन सोसाइटी पीसफुली नहीं रहती थी? तब भी पीसफुली रहती थी. Why? Because the concept of secularism is always in the Indian society since beginning, except of certain period of time. जैसे कुछ समय होता है वो हर सोसाइटी में आता है जो कि इतिहास के काले पन्नों पे लिखा जाता है. जैसे औरंगजेब का टाइम था या फिर कोई ऐसा रूलर जिसने हमारे सेकुलरिज्म को झंझोड़ा और उसमें आग लगाने की कोशिश की बाय डूइंग सम रॉन्ग्स. तो कुछ रॉन्ग कमिट करके जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड कॉन्सेप्ट था इंडियन सोसाइटी में उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई. सो उस पर्टिकुलर समय को छोड़कर उन कुछ दिनों कुछ महीनों या सालों को छोड़कर हम अदरवाइज देखें इंडियन सोसाइटी को उस समय पीरियड को जिसमें भी हमारी डिस्टर्बेंस जो कॉन्सेप्ट हैं ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द इंडियन सोसाइटी उनको हम देखें कुछ समय को जो बुरा समय है उसको डिलीट करने के बाद तो क्या बाकी सारे धर्म हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी सिख ये सभी क्या पीसफुली इंडियन सोसाइटी में नहीं रहे थे या नहीं रह रहे हैं या नहीं रहेंगे? And even if there are some violations which are considered to be some violations, उनके बारे में अगर हम बात ना करें, बात छोड़ दें उसको, बात करनी चाहिए, जरूरी है करनी चाहिए, बट उस समय काल को देखें वो कितना लिमिटेड पीरियड था और एनालाइज करें तो क्या इंडियन सोसाइटी कभी पीसफुली नहीं रही और क्या एक दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं किया, एक दूसरे के साथ भेदभाव किया, और तब आंसर अगर हम खोजें so we will find that the Indian society always remained peacefully. Similarly, social justice was already there in the Indian society. It is only that we have recognized them and put it into the constitution. So was not the Indian society before the written constitution controlled and governed according to these principles?
सो आपके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जो दो एस्पेक्ट्स हैं उसमें से एक एस्पेक्ट एक एस्पेक्ट ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में से कि समाज को कुछ सिद्धांतों के आधार पर आप व्यवस्थित और नियंत्रित कर सकते हैं. Society can be controlled and regulated on the basis of certain principles, and those principles exist within the society. वो हमारी सोसाइटी में ही ने ऑलरेडी एग्जिस्टेड है वो प्रिंसिपल जिस पे हम गवर्न करेंगे सोसाइटी को. इसको कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं दैट द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज बी एट वर्क. जो ये फिलॉसफी है इसको कहते हैं हम दैट द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज बी एट वर्क टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द सोसाइटी. यू हैव एन एक्सप्रेस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट हैविंग एन एक्सप्रेस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज बी एट वर्क टू रेगुलेट द एंड कंट्रोल द सोसाइटी. चाहे आपके पास लिखित संविधान हो या ना हो, बट कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा वर्क करता रहता है सोसाइटी में. जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम इंग्लैंड को ले लें. देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंग्लैंड, स्टिल देयर इज गवर्नेंस इन द सोसाइटी. स्टिल द कॉन्स्टिट्यूशन विल देयर इन देयर गवर्नेंस ऑफ सोसाइटी even though they are not having written constitution. So this is what is called the constitution is always at work to regulate the society, and that idea or that philosophy is called the concept of constitutionalism. This philosophy is called constitutionalism. So write down what is the philosophy of constitutionalism. Constitutionalism is a philosophy or an idea that every society has some basic principles on the basis of which the society can be organized and be regulated. It is these principles which will form the basic framework of the constitution. The idea is that the constitution is always at work in the society and that it can bring about stability and balance in the society. The constitution will always be the effective tool in the governance of society. There are certain words which I have brought in short form, जैसे इसमें से work वो नहीं लिखा, और some consti में short form. So write about. So I have used the short form, but you will not use. Otherwise, you become habitual in exams. I used these for hurry in making notes. So come back again to the topic. Philosophy of having the constitution is that even if you are not having some express constitution, there will be some basic governance principles. There always be some basic principles which always working in the society. Those principles always have their roots in the society, and it is on those principles the society is organized. And it is upon those principles the society is organized. And you have it in the written form, or you have it in conventions and practices as you have in England. So either ways, whether it is written or not written, the principles will always keep working in the society. And that is the idea and the philosophy is that the society is always controlled by those basic principles. So whenever you want to frame the constitution, जब भी आपको constitution बनाना होगा, written form में लिखना होगा, then that is these basic principles that will form the basic framework. These principles will form the basic framework of the written constitution. And even if it is unwritten, that will be the framework. And when you will write it, then it will also these basic principles which will form the basic framework. So always there is a constitution which will keep governing the society. So society means what? Societal behavior. It is anything which is balancing the conflict of interest. So there is everywhere you have these basic principles in the society, whatever kind of society you are living. So उस हिसाब से हर जगह उसी प्रकार के बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे. अगर किसी कॉलेज में है तो कॉलेज के कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, स्कूल है तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, किसी
सोसाइटी से आप जुड़े हुए हैं तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। सो ये प्रिंसिपल्स एक्सप्लिसिटली या तो रिटन फॉर्म में होते हैं कि कई सोसाइटी में, और या नहीं भी रिटन फॉर्म में हो, बट जो सोसाइटी रहती है उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर गवर्न होती है। और बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट सोसाइटी में उन प्रिंसिपल्स पे ही होते हैं, और जो कंडक्ट है वो भी इवॉल्व इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स पे होता है, और इन प्रिंसिपल्स को कोई भी वायलेट नहीं कर सकता, और अगर किसी ने इन प्रिंसिपल्स को वायलेट किया देन ही वुड बी मिसफिट इन दैट सोसाइटी बिकॉज ही इज एक्टिंग इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. It is not only this, the idea of constitutionalism is that the constitution is always at work. Always at work means what? The principles I am talking about, or the written constitution I am talking about, it is always be working to organize the society. When you say constitution is always at work means what? Always remember that society is dynamic. Means societal conditions and circumstances always keep changing. And if the societal condition and circumstances change, and if the societal conditions change, so the governing principles also may require adjustments. But ये ध्यान रखना कि बेसिक प्रिंसिपल तो किसी भी सोसाइटी का वही रहेगा, लेकिन चेंजिंग ऑफ सोसाइटी के साथ देयर हैज टू सम एडजस्टमेंट इन दोज प्रिंसिपल्स. सो दैट इज वेयर यू विल से एज द सोसाइटी इज डायनामिक, as the societal conditions are dynamic, the constitution also has to be dynamic. So the point is not the constitution govern, but the constitution should effectively govern. So what the constitution was able to govern effectively today, say 10 years back, the same constitution will not be able to as effectively govern in the same frame the society at the present, because by today the societal circumstances may have been changed. Therefore the basic governing principles will be the same, but those basic principles need some kind of evolution, some kind of changes, some kind of adjustment, so as to be able to or capable to effectively governing the society today. And that is where you see, you always say that the constitution is always evolving document. Constitution static नहीं है. Constitution के basic principle तो static है, वो कभी change नहीं होंगे, लेकिन basic principle का जो अलग manifestations है अलग अलग provisions में, they always keep evolving with the passage of time, because societal necessities change according the governing principles, और जो manifestations हैं they need to adapt to those changes of the society, and therefore as to the change of the society there is to be evaluation of the constitution. और जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे evaluation हुआ है, amendments के द्वारा हुआ है. Through amendments you keep framing the changes in the constitution so as to constitution suit to the existing circumstances, or through judicial decisions also the constitution is changing. Means the interpretation of the constitution gradually evolves, but the basic principles of the constitution remain the same, they will not change. जो बेसिक स्ट्रक्चर 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन का था वही बेसिक स्ट्रक्चर आज भी है. बेसिक स्ट्रक्चर कभी इवॉल्व नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा. सो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, इट कैन इवॉल्व, और ज्यादा मैनिफेस्ट हो सकता है, एडजस्टमेंट कर सकता है बेसिक स्ट्रक्चर में, बट इट विल नॉट चेंज. ऐसा नहीं हो सकता कि पहले सेक्युलरिज्म था बेसिक स्ट्रक्चर में और आज हट गया. मात्र इस वजह से कुछ लोग एंटी सेक्युलर है. उस एंटी इवन इफ अगर कोई रूलिंग गवर्नमेंट में एंटी सेक्युलर लोग हैं, तब भी हमारा सेक्युलरिज्म पहले भी था, आज भी है, और हम आगे भी रहेगा. 1973 से पहले कभी सुप्रीम कोर्ट ने हमने नहीं देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात करिए. तो केशवनंद भारती केस है, और देयर आर सेवरल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जिनमें फिर बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है. केशवनंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन is declared, and there are so many Supreme Court judgments. In several of them, the Supreme Court talks about the interlinkage of the various fundamental rights. Pehle we used to understand the various fundamental rights in isolation, but in Maneka Gandhi judgment in 1978, we have realized that the fundamental rights are not seen to be in isolation. That one fundamental right affects the other fundamental right also. So they are all mutually connected. So there are so many judgments. You talk about the public interest litigation. पहले PIL जैसा कुछ भी नहीं था. But when we realize that the society has become very huge and the socio-economic condition of in India is not
as good as to enable the parties to obtain the justice themselves. So there are several judgments gradually created the concept of PIL, like SP Gupta, Khatri versus State of Bihar, Bandhwa Mukti Morcha. So by the PIL, a person can file the petition on the behalf of other person at a public at large. जैसे कि पहले एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट जैसे तरफ जरूरत पड़ी फंडामेंटल राइट्स को देखते हुए तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का हमने कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया. एंड सिमिलरली देयर आर सो मेनी जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन अरेस्ट, जैसे DK बसु का जजमेंट है, उसी प्रकार के बहुत सारे जजमेंट मिलेंगे आपको. तो देयर आर सो मेनी जुडिशियल डिसीजन जजमेंट्स in which it is also declared there are so many implied fundamental rights. For example, right of women against sexual harassment. Earlier it was not fundamental right, but it is now a fundamental right. उसी प्रकार से मुस्लिम लॉ में हमने पढ़ा था सपना हाशमी वाले केस में right to adapt and right to be adopted is also a fundamental right. But in that we have not declared because of this there are several religious hurdles. So as of now, we have not declared that as a fundamental right. But it is better that we will make it a fundamental right. But in that also we have gone almost to that end for declaring that the child has a right to be adopted. So अभी भी fundamental right नहीं है, जैसे जैसे हमारे पास संसाधन बढ़ेंगे उस प्रकार से evolution होगा सोसाइटी में, और there are several things which could become the fundamental rights. Because there are so many fundamental rights which are inherited और जो declared हो गए हैं आज के समय में, but at the time of making of the framing of the constitution, जब हमारा देश आजाद हुआ था, they were not the fundamental rights. Why? Because we are not having that much of resources as we are having today. उस समय हम पे ऐसे संसाधन नहीं थे जो आज हमारे पास हैं. So similarly, जैसे Muslim cannot adopt the child while he can only do the kafala system. उसको रखने का, पहनने ओढ़ने का बाकी खर्चा ले सकता है, बट अडॉप्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. बट ऑन द सेम टाइम जुवेनाइल सिस्टम 2000 जुवेनाइल एक्ट 2000 में ये चाइल्ड हैज राइट टू बी गेट अडॉप्टेड. सो जिस प्रकार से हिंदू चाइल्ड को एक राइट टू अडॉप्ट राइट है टू गेट अडॉप्टेड, क्या मुस्लिम चाइल्ड को एक राइट नहीं है अडॉप्टेड होने का? सो द जुवेनाइल जस्टिस 2000 and Maintenance Act 2006 that clearly says that be of the any religion a person can adopt the child. So Muslims has got two options, या तो कवाला सिस्टम में वो बच्चे को फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सेट्रा सब कुछ दे, या फिर चाहे तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बच्चे को अडॉप्ट कर ले. So we are opening up these closed kind of things by various changes according to the change of the society. और धीरे धीरे ये भी फंडामेंटल राइट में बदल सकता है as our resources grows, as there is change in the society. So it is the evolution of the actual laws because the constitution is evolving. So when you are talking about the constitutionalism, the second dimension, that of philosophy, so it does not only mean that the constitution works or governs, the constitution works or governs, it is also about the constitution always governs, and since the society is dynamic, so in order to always works and always governs, the constitution has to adapt to the changes of the society. If you never change its principles, it will never change its principles, it will never change its basic structure, but it will evolve through the process of judicial interpretation, it will evolve through the process of amendments, it will evolve by the creations of new practices and conventions according to the concept of the positive morality. तो जब भी आप constitutionalism पे आंसर लिखोगे या बताओगे तो ये एक डायमेंशन है, ये पूरा बताना पड़ेगा. इसी का दूसरा डायमेंशन है, that is constitution is supreme, उसको अभी देखेंगे. So write down first about this topic. The constitution, in order to remain effective throughout, has to adapt to the changing societal circumstances and requirements. It will never change its basic structure or principles. Rather, within the broad domain of the basic structure, it will evolve through the passage of time, and this evolution will take place through the process of amendment or development of new practice and conventions, as well as through the process of judicial interpretation.
Interpretation means what? Judicial decisions. So I am talking always about that constitution evolves. I am not talking that constitution change. Constitution not change. It only evolves. Because when we say that constitution change, then we are talking that the basic structure is changing. But its basic structure always remain the same. क्योंकि जब तक ये सोसाइटी है, जब तक इस सोसाइटी में बेसिक स्ट्रक्चर का मिनिमम फॉलोइंग है, तब तक बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता. इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन विल चेंज बट द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट चेंज एज सच. Constitution will evolve by the judicial decisions, practice, conventions, or amendments, retaining its basic structure. For example, जैसे socialism और secularism हमने ऐड कर दिया प्रीएम्बल में 1976 42nd अमेंडमेंट पे. तो क्या हम उससे पहले सोशलिस्ट नहीं थे? क्या उससे पहले हम सेकुलर नहीं थे? या फिर अब हम ज्यादा सोशलिस्ट और सेकुलर हो गए? So these kind of issues, we are always socialist, we are always secular. 1950 में तो हमने लिखा है Constitution, but Indian society is always socialist and secular. Indian society always have this basic characteristics of justice and equality, liberty, etc. So Indian society socialist और secular पहले से ही है, उसको लिखने की जरूरत नहीं थी. क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया था इंडियन सोसाइटी में, तब भी हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन सब रहते थे, सारे धर्म के एक सभ्य समाज की तरह शांति भाव से रहते थे और कोई भेदभाव नहीं था. सो ये कहना कि अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन लॉ है, इस वजह से साथ हम इसलिए रहते हैं डर की वजह से, तो ये कहना गलत है. क्योंकि जब रिटन लॉ नहीं था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उससे पहले भी ये हमारे अंतर्निहित था और हम साथ में ही रहते थे. फॉर एग्जाम्पल, किसी एकेडमी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी सभी धर्मों के लोग अगर पढ़ाई के लिए जाते हैं और वहां पर बैठते हैं, एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो इस वजह से फियरफुल होकर एक साथ नहीं बैठते, बल्कि इस वजह से बैठते हैं क्योंकि इट इज नॉर्मल फॉर देम. उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एक सिख, ईसाई हैं, और क्योंकि वो वहां पर पढ़ने के लिए गए, कुछ करने के लिए गए, उनका ऑब्जेक्टिव अलग है, तो उस बारे में कुछ कभी उन्होंने सोचा ही नहीं. It is normal for them, and when it is normal for them, then they are not fearful from the law, and due to that fear they are sitting together. वो एक साथ इस वजह से नहीं है क्योंकि वो उस किसी लॉ से या फिर किसी रूल से डरते हैं. सो साथ में रहना डर की वजह से नहीं है, साथ में रहना विद इन जीन्स, उनके खून में है, हमारे खून में है. So these values always existed in the Indian society even before the constitution was made. So इस सवाल का उत्तर किसी के पास नहीं है कि where did you get these principles from? ये principles कहाँ से आए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है. Whether it came from 1935 Act, या आपका Morley-Minto Act 1919 से आया, या फिर उसके पहले किसी एक्ट से आया, या फंडामेंटल राइट्स हम सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट किस कंट्री से लेकर आए. तो जैसे हम कहते हैं कि आयरलैंड से हम डीपीएसपी लेके आए थे, क्या हम आयरलैंड से डीपीएसपी लेके आए थे या फिर हमारे पास था? फंडामेंटल राइट कहाँ से लाए? इंग्लैंड से लाए. तो इसका मतलब ये है कि हम उधर मांगने गए थे कि भाई दे दो, फंडामेंटल राइट दे दो या डीपीएसपी दे दो. कई बार सवाल भी आता है क्वेश्चन पेपर में, वेयर द फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम. सो आंसर राइटिंग में उसका मतलब रहता है कि फ्रॉम वेयर द फंडामेंटल राइट्स आर ड्राफ्टेड फ्रॉम, किस कंट्री में से ड्राफ्टिंग लेकर हमने ड्राफ्ट किया इंडिया के अंदर. इसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडिया के अंदर नहीं था, डीपीएसपी हमारे इंडिया के अंदर नहीं थे. वी हैव जस्ट ड्राफ्टेड फ्रॉम द अदर कंट्री. फंडामेंटल राइट्स दे आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर इन द इंडियन सोसाइटी. वी हैव जस्ट ड्राफ्टेड इट इन द फॉर्म विच इज ड्राफ्टेड इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. सो जो ड्राफ्टिंग का तरीका है हमने वो यूएस से लिया है, फंडामेंटल राइट्स का, अमेरिका से. डीपीएस के ड्राफ्टिंग का तरीका वो हमने आयरलैंड से ले लिया कि डीपीएसपी भी होना चाहिए. बट जो फंडामेंटल राइट्स के एग्जिस्टिंग का सवाल है वो इंडियन सोसाइटी में पहले से था. सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, दैट इज ऑल देयर इन द इंडियन सोसाइटी. एंड देयर आर सेवरल थिंग्स, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को हमने कहाँ लिखा है, रीजनेबलनेस को एक आध प्रोविजन को छोड़कर कहाँ पर लिखा है एक्सप्रेसली हमने कॉन्स्टिट्यूशन. बट इट डू एग्जिस्ट इन द इंडियन सोसाइटी. So there are several other principles which do not expressly written in the constitution but do exist in society, Indian society. उसी प्रकार से नॉन आर्बिट्रेरीनेस हमने कहीं पर भी नहीं लिखा है, बट दे आर ऑलवेज द रूलिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी.
उसी प्रकार सेक्युलरिज्म, इट इज नॉट रिटन एनी ऑफ द आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल में जरूर लिखा है। सोशल जस्टिस इज नॉट रिटन एनीवेयर इन एनी ऑफ द आर्टिकल्स इन द 14, 15, 16, प्रीएम्बल में तो है, but in articles it is not there. In the operating part of the constitution it is not there. But do you not find that the socialism is always there in the constitution? It was always there in the constitution because it is always there in the society. Secularism is always there in the constitution because it is always there in the society. So we have not borrowed it from somewhere. We have just expressed some of them, and some of them remain silent because we cannot draft it in as many words. And these principles are taken from the society only, which are already existing. और सबसे important, through the freedom of struggle, the Indian society, we fought for the independence for certain larger goals. We fought for independence because we wanted social justice. We fought for independence because we wanted equal distribution of wealth. We wanted basic freedom of individuals, of life and personal liberty, the basic freedom of speech and expression. So these were the demands in the freedom struggle. So these were the demands made in the freedom struggles, जो अलग अलग रिपोर्ट्स लाइक मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, तो उसमें मैनिफेस्ट हुए थे, अलग अलग रिपोर्ट में मैनिफेस्ट हुए थे ये सारे डिमांड्स। और ये डिमांड्स हमने कहीं बाहर से तो लिए नहीं थे, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स थे हमारी इंडियन सोसाइटी में, ये प्रिंसिपल्स थे हमारी इंडियन सोसाइटी के। और इसी वजह से हमने कहा कि हम अपनी इंडियन सोसाइटी को इन प्रिंसिपल्स पे कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, बिकॉज दीज प्रिंसिपल्स आर इनहेरेंट विद इन अस। उन्हीं को हमने फंडामेंटल राइट्स हो या फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर डीपीएसपी हो या उसका एक्सप्रेशन प्रीएम्बल में हो, इन्हीं प्रिंसिपल्स को हमने लिखा है। सो इनको हमने कहीं बाहर से नहीं लिया है, दे आर ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द विद इन द इंडियन सोसाइटी। तभी तो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। Why? Because whatever you have in the constitution, that is what is practiced by the society at large. You see, deviation, aberration and violations are always there in the society. But you cannot make the violations as a general rule. Secularism अभी भी वायलेट होता है और पहले भी होता था। सबसे बड़ा वायलेशन तो सेक्युलरिज्म का इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के समय हुआ था, पार्टीशन के समय। द काइंड ऑफ मास किलिंग्स टुक प्लेस स्टिल वी रिमेन सेक्युलर। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में लाखों लोग मरे थे, स्टिल दैट वुड बी कंसिडर्ड एज डेविएशन और एबरेशन। The way of life in India was always the Hindu and Muslim live together. It is because of some political reasons that communal thing was fermented and ultimately the communal kind of violation was held. अभी भी जहाँ पे भी राइट्स होते हैं, जैसे मुजफ्फरनगर का राइट हुआ या फिर गोधरा राइट हुआ, all that was the only place where happened. That was the particular heat of the moment. But rest of the India उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अदर प्लेसेस पे हिंदू मुस्लिम्स अदर रिलीजन्स पीपल्स ऑलवेज रिमेन पीसफुली एंड हैप्पीली। सो किसी भी राइट्स की बात आप कर लो, दैट वुड कम अंडर एक्सेप्शंस। किसी भी कारणवश किसी एक जगह पर हो गया, बट दैट डज नॉट मीन इन रेस्ट ऑफ इंडिया द अदर हिंदू मुस्लिम्स or any other religion they are not living together. So that way the general life in India of people is to remain secular, to do social justice and so forth. देखो, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीजें एक्सप्रेस की गई होती उस टाइम that is not practicing in India, then the constitution will fail. Constitution fail हो जाता। Why? Because जब लोग उस चीज को प्रैक्टिस ही नहीं करते जो पहले से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, तो उनको प्रैक्टिस करने में वो दिक्कत होती, और जबरदस्ती फोर्सफुली उनको प्रैक्टिस कराया जाता लिखने के बाद, और दिक्कत होती तो वो उसको प्रैक्टिस नहीं करते और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फेल हो जाता। बट दैट वाज नॉट द सिचुएशन in the past also and in present also. So these are those basic principles of the constitution which are the founding stones of the constitution. These are the basic framework of the constitution. जिस प्रकार से किसी बिल्डिंग की बीम या फाउंडिंग पिलर्स उसके फाउंडेशन होते हैं, उसी प्रकार से ये प्रिंसिपल्स आर द फाउंडेशंस एंड पिलर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम किसी बिल्डिंग के अंदर कोई मकान बनाते हैं फाउंडिंग पिलर्स के ऊपर, तो उसमें कमरे अलग अलग बना सकते हैं, उनका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम चेंजेस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, बट द फाउंडिंग पिलर्स, द फाउंडेशन बेसिक प्रिंसिपल वुड बी द सेम। एंड व्हाट आर द फाउंडेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दीज फाउंडेशंस आर
those basic values and principles on which the Indian society is existing and living. And those basic values and principles, be it expressed in the constitution or not expressed in the constitution. Natural justice is not expressed. Non-arbitrariness is not expressed. Reasonableness is not expressed excepting one or two articles. But still they are the basic principles. So we cannot violate these principles. These principles would not change. और बाकी का कुछ भी चेंज कर लो बट ये बेसिक प्रिंसिपल चेंज नहीं होंगे. So when we are talking about the constitutionalism, what we mean is constitution evolves with the passage of time, but it will never change the basic structure. Rather it may strengthen the basic structure. जो evolution हम कर रहे हैं, amendment हम कर रहे हैं, judicial decisions हम दे रहे हैं, वो इस तरीके से भले ही हो जो that it will strengthen the basic structure. Means it is in the favor of the basic structure. They may make the basic structure more manifest, but this evolution would not violate the basic structure. Similarly, when we are talking about the human life, whether it means only the human life, सांस लेना रोटी खाना, that is all, or it also means the dignified human life. So by the various Supreme Court judgments, where it is announced the human life is dignified life, by the various Supreme Court judgments, we are making more manifest the human life and more comprehensive. So when we are pronouncing the dignity of life is a very part of the right to life, then we are also pronouncing that the dignity of life of the prisoners also. Even of a prisoner, the life, the dignity is fundamental right. So a prisoner shall also not be tortured. Inhuman treatment must not be done with a prisoner. Similarly, dignity of a woman, dignity of child, dignity of a old age person. So these judgments are not changing the basic structure or meaning of right to life. Rather, they are making it more explicit, more comprehensive, more manifest, more meaningful, more effective. So यही तो कर रहा है. Similarly, prevention of the smoking at the public places is also the manifestation of right to life or making the right to life more comprehensive. So the constitution evolves not by changing the basic structure, but it evolves by the manifestation of the basic structure, making it more comprehensive and adjusting circumstances. Similarly, जैसे farmers हैं in India, farmers due to the natural hazards, बेमौसम बारिश होने से, सूखा होने से, जैसे टिड्डी आती हैं तो टिड्डी दल से, and various other factors due to which उनकी फसल बर्बाद हो जाती है. एंड जो फार्मर्स की लाइवलीहुड है वो पूरा का पूरा साल उसी इनकम पे चल रहा है. सो जो फार्मर्स हैं एंड बेसिकली अबाउट दोज फार्मर्स जिनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या फिर छोटे किसान हैं, लघु किसान, उन्होंने बीज के लिए, खाद के लिए, खेतों के कल्टीवेशन के लिए, तो उनके लिए लोन लिया होगा साहूकार से, बैंक से, from merchants or from banks, or they have put it there all of the savings for the cultivation of crops, for sowing of crops. अब उनका सारा पैसा फंस गया और पैसे देने होंगे, बाकी के जो लोन वो चुकाने होंगे और पैसा है नहीं उनके पास. And due to this, many of them start committing suicides. So is it not the situation where the dignity of life of that person and very right to exist, a very right to live with a dignified manner should be guaranteed? So for that only the state should announce compensation for the farmers, because that is a matter where the state is a public trustee, because जितने भी पैसे और resources हैं सब state के पास हैं और वो work करता है as a trustee, and it is the duty of the state to award the compensation for such kind of hazards, natural hazards or accidents like train accident, vehicle accident, motor vehicle accident. Because where will these poor people will go? India is a welfare state, and welfare state है तो natural hazard की वजह से जो losses होंगे that should be compensated by the government. Similarly, कभी फ्लड आ जाती है, जैसे केरल फ्लड हुई थी, जम्मू कश्मीर फ्लड हुआ, बिहार में होते हैं, हर साल आ जाती हैं. So इस kind of situation में भी poor families, farmers, yes, they got the sufferings. COVID-19 pandemic हुई, so migrant workers are suffered a lot.
तो उनके लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे various packages. Even the quota also provided, double quota also provided, and in those quota pulses were provided. The scheme of Manrega was enhanced, increased. So what all these are provided by the state are provided under the fundamental rights only, the right to life, live with dignity, because the right to life includes the right to live with dignity. So the evolution takes place with the changing needs of the society, but the basic principles of the constitution will never change. Now come to the second point on constitutionalism, that constitution is supreme. दो पॉइंट थे, एक पॉइंट था constitution is a philosophy और दूसरा पॉइंट था constitution is supreme, that is there has to be checks and balances upon the power of government. So now we are talking about the checks and balances, means constitution is supreme and there has to be checks and balances upon the power of the government. So when you say constitution is supreme, what do you mean? So it talks about the articles or the values or principles in the articles, the essence of the articles. So both are supreme, but when talking about the comparison, then the principles and essence of the article is more supreme. So the basic governing principles are more supreme. So the constitution is having its own identity and constitutional identity is supreme. पहला खुद आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशन की खुद की एक आइडेंटिटी है और उसकी आइडेंटिटी सुप्रीम रहेगी. दूसरा और तीसरा, constitution identity is not only supreme at one point of time, but it has to be continued to be supreme for all points of time as long as the constitution exists. It means the basic values and principles on which the constitution is founded, that is later on recognized by the Supreme Court as a basic structure. So संविधान के वो मूल्य और वो सिद्धांत जिस पर संविधान आधारित है और जिस पर संविधान बनाया गया है, जिस पर संविधान की संरचना हुई है, वो सिद्धांत सर्वोपरि हैं और कोई भी व्यक्ति या प्रशासनिक तंत्र, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन या लेजिस्लेचर, it cannot rise above the basic values and principles. So it is to be ensured, even though the government has the power which is discretionary or absolute, then it is to be make sure that government should not act with the absolute power if it violates the values and principles of the constitution. That is the basic founding rocks of the constitution. Here we are not using the word basic structure because it is later on recognized in the case of Nand Bharti case with the amendment. Constitution is supreme means constitution looks up everyone equally. और इसको हम गवर्नमेंट के पावर के डोमेन में लिमिटेड होकर नहीं देखेंगे. That is it, constitution is to control upon the government powers. इसको तो ये करेगा ही करेगा, no doubts. But it is not limited only to the governmental powers. Constitution is supreme and it controls the individuals also. For example, कोई private institution है, private company है, private society है. Any private individual, to you and to me, anyone, all over in India, it control everyone. Maybe legally it does not, but morally it does. At times, maybe it would not control legally, but morally it does every time. Because constitution expresses the basic philosophy of the society, and that philosophy says that everyone is equal and you should treat them equally. So constitution is not a inert statutory document. It is something which is of living values. अगर आप essence of constitution में जाओ, it is set of something living essence values. Also society में there is set of living values and basic principles which will make the society work in a particular manner, stabilize in a particular manner, balance in a particular manner, and maybe at times person has curtailed his freedom. Maybe voluntarily of his own, and if he does not, then the law is there to curtail, so that the larger goals of the society has to be fulfilled. And that is what the constitution is about. So the essence is that supremacy of constitution means the basic values and principles which the constitution has taken from the society itself. The source is not US or Ireland, whatever.
The source is not any law existing particular before framing of the constitution. The source is the society itself from where we have taken those values, and the constitution is founded on them, and those values and principles cannot be violated in any circumstances by the state, by the government, or by the individual, or by an individual. कुछ फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली इंडिविजुअल पे भी लगते हैं, जैसे आर्टिकल 21 इंडिविजुअल्स पे भी लगेगा मोर और लेस, हैबिस कॉर्पस वगैरह, लेकिन कुछ हैं जो सिर्फ स्टेट पे लगते हैं, लेकिन वो भी इंडिविजुअल पे लागू हो सकता है थ्रू द मेकिंग ऑफ लॉज। जैसे किसी फंडामेंटल राइट में लिखा है द स्टेट शैल डू नॉट डू दिस, लेकिन उसके लिए अगर आप लॉ बना दो और इंडिविजुअल को भी बाइंड कर दो, एंड वी हैव सर्टेन लॉज टू बाइंड द इंडिविजुअल्स so that they will not violate the fundamentals rights of others। जैसे कि हमारे पास एक लॉ है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप्स SC एंड ST, एक और है प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स। सो ये सारे लॉ बनाए गए हैं। सो व्हेन यू से आर्टिकल 21 etc 14 etc applies upon the state and not on the individual. Still, the state has made these laws, and the individuals are governed by these laws, and from where these laws govern their validity. These laws govern their validity from constitution itself. तो ऐसा नहीं है कि individuals are not bound by the fundamental rights। तो fundamental rights का अगर डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल पर नहीं भी लग रहा है क्योंकि लिखा है स्टेट, तो अभी स्टेट ड्यूटी बाउंड है DPSP के अंदर, फंडामेंटल राइट के अंदर कि वो लॉज बनाए ताकि इंडिविजुअल भी उसको वायलेट ना कर सके। सो राइट डाउन द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द आइडिया ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम and it cannot be violated in any circumstances. The Constitution has its own identity, that is the basic values and principles of the Constitution, which cannot be violated in any circumstances. These values and principles are essential foundation stone of the Constitution, and they constitute the real identity bracket में basic structure of constitution. It has been held in M. Nagaraj versus Union of India 2006 Supreme Court, and it is 5 judges bench and justice delivered by S.H. Kapadia Justice. It was held constitution is about limits and aspirations. Limits means limitation upon powers and aspirations mean goals. And it is about retainment of the constitutional identity, and it is about retainment of constitutional identity, and in no circumstances can the constitutional identity be violated. It is not only about constitutional identity, rather it is also about the continuance of constitutional identity. The powers of government have to be curtailed, means limit, have to be curtailed so as to ensure that it does not violate the essence of constitution. The essence of the constitution. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था, and it is very important, write down. The Supreme Court, the statement is this: the Supreme Court is not bound by the text of the Constitution. Text means the wording of the Constitution. Text of the Constitution. Rather, it is bound by its spirit. Rather, it is bound by its spirit. That is the fidelity. The fidelity of loyalty of Supreme Court is to the spirit of the Constitution and not to the express wordings of the Constitution. Express wordings means text of the Constitution. So, इधर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि that Supreme Court is not bound by the express literal meaning of the articles in the Constitution. Rather, the Supreme Court is bound by the spirit, the basic principles behind those express provisions articles. So, for example, Article 14 में express word है और उनका एक particular interpretation निकलता है, literal interpretation, और उन्हीं में implicit है concept of social justice. And if the goal is not achieved by the express wordings of that article, then the court will go for the implicit
meaning of the social justice, implicit wordings or meaning in that article. फॉर एग्जाम्पल नागराज वाला केस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे वैसे डिटेल में। इसमें आर्टिकल 16(4)A और 16(4)B का अमेंडमेंट किया गया था और इसमें एससीज और एसटीज को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने की बात की गई थी। सो इट इज डन बाय द अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट इन दैट टाइम एट दैट टाइम। इसमें कैरी फॉरवर्ड रूल एंड रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू एससीज एंड एसटीज को लाया गया था। दैट वाज चैलेंज इन दिस केस। उसमें कहा गया था कि जो कंटेंशन लिया गया था दैट द रिजर्वेशन एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम इज फाइन एंड सोशल जस्टिस टू बी डन एट द इनिशियल स्टेज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस। उसके लिए इंदिरा साहनी एंड मेनी जजमेंट्स आर देयर बट द क्वेश्चन रोज दैट कैन यू go on to give reservation to SCs and ST in the promotions as well, means what is the extent to which you will be going for the social justice। तो उस केस में जो जनरल कैटेगरी के और ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ इनजस्टिस कर रहे हो। तो दिस वाज द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आर्टिकल 16(4)A और 16(4)B के अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया था। कोर्ट ने कहा दैट स्पिरिट में ये अमेंडमेंट सही है। इन स्पिरिट दिस amendment is not wrong because the educational backwardness of SCs and STs may be of such an extent in a specific case that may be required to give reservation not only to their initial appointment but in the promotions। But whenever an actual reservation or promotion is given, the state concerned has to justify on the basis of quantitative data। तो स्टेट को प्रूव करना पड़ेगा कि इस जॉब में हम प्रमोशन में SC ST को रिजर्वेशन दे रहे हैं क्योंकि उनका जो रिप्रेजेंटेशन है हायर पोस्ट में इस जॉब में वो नेग्लिजिबल है, देयरफॉर वी आर गिविंग देम प्रमोशन। सो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वी आर लॉयल विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट टू द वर्ड्स, मींस दैट दे आर नॉट गोइंग विद द express wording of 16(4)A and 16(4)B or article 40 but they are going by the spirit of the social justice which is implicit in the constitution। and social justice if requires कि SCs and STs को reservation दो in promotion then that step taken by the government is not unconstitutional। so ये तो constitution में लिखा है but जब भी आप actual reservation दोगे तो law बना कर ही दोगे। so there has to be a legislation by parliament for 16(4)A and 16(4)B। so उसके लिए जब आप law बना के किसी particular job में reservation दोगे तो in that case the examination will be that whether in that job the reservation in promotion is required or not। similarly supreme court के एक judgment में ये कह दिया गया है कि higher education में higher जो medical students हैं post graduation MD करने के लिए उसमें reservation नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उस स्टेज पर social justice की जरूरत नहीं है। पीजी लेवल पे एमडी स्टूडेंट्स मेडिकल स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट इज हायर एजुकेशन एंड देयर वी कैन नॉट compromise with the efficiency of the doctors। so basically the point is deciding it why because it is not looking expressly the wording of the constitution but it is looking at behind the essence of these आर्टिकल्स रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक का सेंस तो ये है कि सबको बराबर का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए बट मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में मेडिकल और इंजीनियरिंग ये जो टेक्निकल प्रोफेशंस हैं स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड है इसमें भी अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे और लेस एफिशिएंट पीपल्स को भी आप रिजर्वेशन देकर हायर पहुंचा दोगे हायर अथॉरिटीज पे। मान लो वो मास्टर डिग्री कर ले उस वजह से और उसकी एफिशिएंसी कम है, मान लो सर्जन बन जाता है एमडी करने के बाद और वो लेस एफिशिएंट है नॉट कैपेबल दैट मच और सर्जरी करता है और कोई व्यक्ति मर जाता है बिकॉज ही इज नॉट दैट मच कैपेबल देन इट वुड बी कॉम्प्रोमाइज टू द लाइव्स ऑफ द अदर पीपल। सो उस लेवल पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू नॉट गिव रिजर्वेशन। अदरवाइज ऑल्सो इस एग्जाम्पल को ना लें कि एक बार एंट्री लेवल पे उसने एग्जाम रिजर्वेशन से चलो मास्टर डिग्री में दोनों चले भी गए उसके बाद तो एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे अचीव करना पड़ेगा तभी पास होंगे, वी विल कंसीडर दैट। बट उससे पहले बिकॉज मास्टर डिग्रीज आर ऑफ द रिसर्च लेवल तो रिसर्च लेवल के लिए कैपेबल व्यक्ति तभी माना जाएगा व्हेन ही इज कंपीटिंग विद द अदर्स। और किसी व्यक्ति को रिजर्वेशन देकर हम उस स्ट्रीम में डाल रहे हैं और उससे जो ज्यादा स्कोर करने वाले व्यक्ति को रोक रहे हैं देन it is ultimately we are restricting the more intelligent people to do the research and it is
it is for the society and for the country. It will be beneficial when the research is going on and the output would come, because more efficient person would more capable of doing the research. So maybe that would be the essence in this kind of judgments. Write down a case: I.R. Kolio versus State of Tamil Nadu, 2007 Supreme Court, 9 judges bench, judgment delivered by Y.K. Sabharwal Justice. Y.K. Sabharwal Chief Justice. It was held in this case that constitutionalism is about checks and balances upon the power of the government, so that it ensures that the government does not destroy the essential principles of the constitution. इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो एम नागराज वाले में, सेकंड पॉइंट इधर इसके बाद, that Supreme Court gave the theory of guided power. Supreme Court gave the theory of guided powers. It means even if there is no guidelines laid down, even if the power appears to be absolute and discretionary, the essential guideline is the spirit of the constitution. और आपको अगर लिमिटेशन में कोई पावर नहीं भी दे रखा है, जो एग्जाम्पल गवर्नर का पावर वगैरह एक्सेट्रा हमने देखा, तो वहां पर भी स्पिरिट और लार्जर गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द एसेंशियल गाइडलाइन एंड नो वन कैन राइज अबव दैट. That is what meant by the theory of guided power. So that's it for this topic and for this class. Thank you for watching this class. In next class we would shift it to the amendment, topic amendment. Thank you for watching lecture.